When we look at FDI, we see Pakistan at the very bottom here. It's barely visible, but we find that there's no shortage of policies. Perhaps the area that we need to focus on is the direction of policy and also its implementation. पाकिस्तान में जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का जो एक कंसेप्ट है मोस्टली ये है कि कंट्रोलिंग फैक्टर के तौर पे जाना जाता है। उसका जो मकसद ये नहीं है कि वो फर्म के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा। ये जो जो वो टेक्निकल लोग हैं वो उस बोर्ड में नहीं लाए जाते। इलेक्शन जिस वक्त हो रहे होते हैं तो क्लियर नहीं होता कि सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आने वाली है। फॉर एग्जांपल के दोनों जो हैं वो सेम लेवल पे जा रही हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये बता नहीं सकते या वो इतना कॉन्फिडेंस उस तरह रख नहीं सकते कि कौन सी पॉलिसी आएगी और हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। We have 3 presentations. I would like to Syed Twangar Hussain Kazmi to present his study first. You have 20 minutes. Assalamu alaikum, everyone. My name is Twangar Kazmi. I'm part of this RASTA program. While they're putting up the presentation, I'll just give a brief introduction. My co-PI is Mujahid Abdullah, and I've had advisors from PIDE, Dr. Athar and Dr. Iza, who supported me and sort of advised me, mentored me in this. So we started this project about 12 months ago, and this turned out to be a bigger report than initially I had thought. So Dark Communities is basically a research think tank. It's my own initiative. I started with a couple of like-minded people. It evolved into something that is now promoting research among young researchers, especially. And alongside that, to make it sustainable, we do consultancies and sort of in the development sector, take up research projects. I myself am also engaged with other organizations such as UNDP and of course PIDE, HelpAge, etc. And so this really, this was really my passion. I would say that I started exploring this topic back in Manchester in 2013. So I found out that there's a relevant program here that's talking about this. So this is where it began. So the subject matter is basically decoding the East Asian success and unleashing FDI's potential to boost local learning. And the idea is obviously because Rasta's whole objective is to develop or promote sort of a policy discussion on this. So we've tried to develop a policy roadmap on this. Um, we had broad research questions on this, but I'm going to obviously skip a few slides here for the purpose of conserving time. And really, these are the 2 research questions that we'll be focusing on, both in the research paper, I would say, and also in terms of this presentation. So what are the primary factors underlying Pakistan's trade competitiveness challenges? And where does this research come in? We're trying to see how East Asian economies progressed with regards to industrial competitiveness, using FDI as an engine of driving innovation and growth. And so these are broadly speaking, in the second point, you can see the areas that we'll be focusing on. I'm actually going to start right from the indicators because I might not have time at the end to discuss this. But essentially, what we see here, these are the graph that you see is the real GDP growth, and each bar represents the decade of growth. So average growth on decade, basically. And while I'm on this slide, I might explain that we basically analyze 10 East Asian economies. These include, of course, the following that are listed below: Japan, Hong Kong, Singapore, South Korea, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand, China, and Vietnam. Pakistan obviously comes into this as an integral part when we do the comparative analysis. What's important here is that basically all of these East Asian economies had sustained decades of economic growth, at least 3 decades of sustained economic growth. And by sustained economic growth, high economic growth, I mean GDP over 7%. In some cases, like
China, it's over 8% and touching 10%. So clearly, I mean, what is my motivation for this research? It's this, that clearly there's something has gone wrong in terms of Pakistan, and maybe we need to reconsider and look at certain examples in the region, in the East Asian region, that can help us or guide us. If anyone's interested in the regional comparison, when we talk about South Asia, we're not doing too well here either. Um we can see that when we compare to India and Bangladesh, even though things are not great, there's a downward trajectory here, and each percentage decline on a decade is actually quite significant. This is not year on year; these are decades. Here, I think I can explain sort of the concept of cohorts, East Asian cohorts. I'm sure all of you already know, but some, I think this is basically an export comparison between the economies. And here we also get to see the groupings of these cohorts, where we see Japan on top. And obviously, Japan's story starts not from 1990, but post World War 1950s onwards. But in any case, they're the leader of the cohort, and we see other economies like Singapore, Hong Kong, and South Korea that are sort of in this other cohort batch of economies. And then we see a third cohort as well down there with Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. And we also see Philippines at the very bottom. They're also sort of getting in the race. Where is Pakistan in all of this? I had to zoom in. Basically, if we just selected a few economies where we can, you know, show Pakistan's trend, but it's quite evident that even economies like Vietnam and Philippines that were comparable to Pakistan in 1990, in the 1990s, or Vietnam all the way till 1998, they have taken certain measures, and they have really expanded their export growths. Uh, Moving forward, this is just a comparison. This is just a timeline sort of analysis of the annual FDI in Pakistan, just to give a brief overview that it's basically dipped. We only had one sort of spike in the 2007 era. I think it was some telecom FDI that came in, but or maybe some bilateral arrangements, but more or less there has declined. Um, so the literature itself covers these three areas in the report. I won't get into the details. I would just say that the analysis or the review of the literature has been mixed. And this is where this research also comes in to explore this further. Some of the studies have said that there has been FDI-led spillovers in economic growth in the economies. Others say that it's conditional. There are certain mediating factors or influencing factors that will determine whether FDI will lead to knowledge spillovers in an economy, and how can the economy benefit from them. Others have obviously contradicted this as well. So just in terms of the theoretical framework, this is where we have basically identified certain factors that may, based on literature, impact the role of FDI or the spillovers of FDI in the economy. These include the following: human capital development, IPR, size of government, trade openness, investment environment, the legal system, freedom to trade, and regulations. Now, obviously, when you go into the report, you will find more details on this, because each of these are basically, some of these are sub indices, and they have a lot more going on than just the obvious. We also, part of this, we also had an econometric model that we ran to try to understand. And this is basically complements the research. I wouldn't say that the research focuses on this entirely, but what we've done is that we've used the Farrell and Winkler study of World Bank to run the model on our countries of interest. And the model is standard, but it looks at first one is basically our primary model. The other one is used for the robustness check. We look at labor productivity as a dependent variable, and then we use interaction terms to figure out whether FDI actually has an impact on whether the increase in productivity is actually determined by FDI or not. Um,
these are the mediating factors that I talked about earlier. Obviously, they're included in the model. Just for the purpose of this presentation, I will go quickly into these four areas. Um, uh, we'll just start. So I've already started with the timeline analysis to begin with. The story is the same as I mentioned before. When we look at FDI, we see Pakistan at the very bottom here. It's barely visible, but I'll explain anyways. The bottom line is that East Asian economies had FDI had a significant FDI coming in when we look at it as a percentage of the GDP. Pakistan, there's only been a spike in the first decade of the 21st century, which is 1.39% of the GDP. Other than that, we see that the story has not been very promising in terms of investment. But besides this, even if investment comes in, how can we really use this investment to our advantage? That's what we need to see. This is the same thing described through a graph. So I'll just quickly get into the policy analysis bit of this study. We, as I explained, looked at different economies. I'll just quickly sort of explain key points in this and won't really go into the details. But uh, so Japan, when we look at Japan, what are the striking features? A robust investing in robust infrastructure, export-import banks. We see that there's been investment in R&D, and this is important. Key support from key government agencies such as the Ministry of Economy, Trade, and Industry. When we look at Singapore, they offered incentives and tax breaks to attract FDI and supported MNCs. There was obviously investment in infrastructure and a lot of focus on education and R&D. When we look at South Korea, we see that they had an open FDI policy leading to the liberalization of FDI regulations and more incentives for investment and export processing zones. Once again, they had government agencies that were involved in the technology transfer. For example, the Korean Institute of Science and Technology, Evaluation and Planning, KISTEP. There's another one called the Korean Institute of Advancement of Technologies. So a lot of focus on technology transfer. When we look at Philippines, we see that um, they had also developed special economic zones. When we look at Malaysia, we find that they also encouraged FDI through investment tax allowances, infrastructure allowances, etc. There's a lot of details here, but I will go through it quickly. In terms of Indonesia, we see that they had liberal FDI policies under the Foreign Capital Investment Act of 1967. And post 1986, they had focused on new investment, attracting new investment in the country. When we look at China, obviously they channeled their savings into targeted sectors and established a comprehensive base by 1978. One interesting thing, obviously, everyone knows about their rigorous planning and consistency in policy. Uh, but by 2001, manufacturing made up 70% of the FDI coming in China and 56% of the total FDI. Today, more than 80% of the FDI in China's greenfield investments. So, and almost all of it is in the manufacturing sector. So, Vietnam, I mentioned earlier that they were comparable to Pakistan not too long ago, maybe 3 decades ago, in terms of their exports. But in 1986, they started an economic renovation policy or reform policy known as the Doi Moi. And it basically introduced several economic reforms. And that's where we found that Vietnam really turned around and started to increase its industrial base. So yeah, the same thing is mentioned here that by 1990s, they didn't really have any high value added exports. But after that, in 2012, and that's not a long time, maybe 22 years, they have manufacturing commands nearly 70% of their exports, and 15% of that is really high tech products. I'll skip the case study. We come on to the econometric results. These are the summary statistics
We had observations of 530, and well, it's really difficult to explain the entire table, but I've really taken out a few areas where we can where I can sort of share the implications of the findings. We find that prediction of IPR is associated with an increase in FDI spillovers in the pooled OLS, but not the fixed effects results. It's worth noting here that we ran 6 regressions. So the primary one was the labor productivity one. The secondary one was the TFP one. Within this, the first one is first column is sort of the OLS one. The second one is fixed effects for entity, and the third one is fixed effects for both entity and year. Same for the TFP. This is just a summary from that, and then we can see where the discussion heads later on. Countries with higher level of domestic investment, this is the investment environment that we talk about, have stronger FDI spillovers when we measure it through labor productivity. Better legal systems have a positive impact on FDI spillovers, both the models. Um, Countries with lower levels of government interference benefit from FDI spillovers. There was no significant impact found of FDI on productivity spillovers in terms of openness to trade. Um, in terms of human capital, we found that countries with higher human capital see a reduction of FDI spillovers. That could be due to the fact that they're already quite developed, and the benefit they would extract from them may not be to the same extent. When we talk about regulations, countries with fewer regulations, including market freedom, see significantly positive impact of FDI spillovers on labor productivity. Um, And when we talk about regulations, it was a sub-index, but it measures credit market, labor market, business, and freedom to compete. I would conclude with certain policy discussions. This is probably the most important part of the whole research report. And I think if you read the report, you'll find that there's a greater amount of detail, because we also briefly analyze the current state of our policies and frameworks that we develop. And what we found was basically that there is a list of existing policies in Pakistan related to trade, development, innovation, etc. And we find that there's no shortage of policies. Perhaps the area that we need to focus on is the direction of policy and also its implementation. But these are the initiatives and sort of steps that have been taken. So it's not to say that no work has been done on it. And many of these policies also explain and tell us a lot of good policy recommendations and measures and steps. It's about how we can really implement them. So one aspect that I started to focus on was how can we even start doing this. And the first thing I would like to say is that there are some, I would like to call it, structural changes that need to take place. And one of these, to begin with, is we have to eliminate short-termism in our policy and governance. So continuity of policy is needed in this. For that to happen, maybe perhaps there needs to be a multi-party political consensus endorsed by leading national economists and even guided by them on economic reform targeted at FDI supported sport-oriented reindustrialization. Um, well, the other thing is basically who is going to be the custodian of this. It has to be an autonomous, non-political entity. So that's something that we can look at. I also found this special investment facilitation council. In the report, I go into some detail on what were the targets and how were these targets missed. But what I find here is that there needs to be a politicization of SIFC for it to have any sort of long-term impact. And the ambition and the targets also need to be increased with regards to this. And these sort of ad hoc arrangements don't really sort of
don't really allow us to reap long-term benefits. The other thing I think I'll just read out because this might be a bit sensitive, but we need to address the conflict of interest stemming from the symbiotic relationship between business families, elections, and legislators through ensuring greater transparency by making family and business interests of legislators in the upper house and lower houses public, even in the provincial assembly, on that note. Moving forward, in terms of research and development, I think I don't really need to go into the details of this, but a lot of work can take place in this. One area that I think is important is to have a comprehensive investors' needs assessment. So if we are saying that we want to attract FDI, we need to know what they're looking for in our local market and in terms of factors of production and resources as well. We can carry out an assessment with projections of competitors to Pakistan's traditional exports as well. Even in terms of textiles and our traditional exports, are we really in position to sustain them? What are the changing trends? So in some economies, we find that they shift from these traditional sectors to other sectors, and that can leave a gap for Pakistan to actually exploit. Personally, I'm not too fond of our traditional sectors, but they're there, so we can't ignore them. Right, and capacity and quality gap analysis of Pakistan's manufacturing sector and that of global competition in our key export sectors. In terms of this further, we can look at a comprehensive market research to identify new export opportunities. We can leverage the modern tools such as data analytics and AI market intelligence to figure out and identify high potential export markets. Yeah, a detailed study on existing major local and global value chains in which Pakistani firms are a part of. I think this is also important. On the regulatory front, we need to see and we need to improve the legal infrastructure and access to justice. And this really comes from our findings of the various East Asian economies and the mediating factors we looked at. We can simplify, automate, and expedite the process of patent and trademark registration. We may need to carry out a study on the IPR regime in Pakistan. We should develop an efficient dispute resolution mechanism. Awareness about the IPR is also important. We need to reevaluate the effectiveness of technology parks and assess the degree of knowledge sharing that has actually taken place. We also need to reassess and evaluate the performance of Export-Import Bank of Pakistan. In terms of trade measures, a rule-based system is, I think, better than other ad hoc arrangements that sometimes we have. Yeah, and we should streamline trade procedures. This involves simplifying customs clearance processes, expediting trade documentation, etc. Some of these I know are generic and you've heard them a lot of times, but it's worth repeating. Strengthening international cooperation, that's also important. Actively engaging in trade negotiations, exploring opportunities to penetrate new markets. In terms of human capital development and technology, this is very important. This is, these areas are almost fundamental to the country when we talk about expenditure on education, skills development, other vocational training programs, and building a skilled workforce. But obviously, there needs to be some sort of relationship and I would say association between the academia and the industry. And when I talk about academia, I don't really mean just academia in Pakistan, because maybe we're not really aware of what's going on in the world. And so we may bring in foreign academics or experts who know the requirements in terms of industry and what is the cutting edge and leading technology over there. And obviously academics over here can collaborate with them and then sort of combine it with the fact that we have how can we sort of improve our
local industry in this respect. Other things is obviously related to other bilateral, multilateral research institutes. The time's up. Okay, I appreciate the opportunity that I had in this, and my slides are also done. So thank you very much. And once again, I'd like to acknowledge PIDE, the RASTA program, and also my colleague Mujahid Abdullah. Uh, he was very instrumental in some of the econometric analysis that we did, and our advisors, Dr. Athar and Dr. Iza. Thank you very much. Thank you, Twangar, for excellent presentation. Next, we have Dr. Abdul Wahid from Namal. He will present his study on decapitalization in the Pakistan Stock Exchange. थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, सबका शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्टॉक एक्सचेंज, जो मेरा टॉपिक है डिकैपिटलाइजेशन इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मेरे साथ जो OPI हैं वो डॉक्टर जुबैर मुमताज़ साहब हैं। इसके इस स्टडी को करने के लिए जो एक जी इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो हमारे पास एक डिबेट थी, एक आइडिया था कि जब भी हम शाम की खबरें सुनते हैं तो हमें एक खबर सुनाई देती है कि जो स्टॉक इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो नफसियाती हदें अबूर कर गई है। तकरीबन हम सारे लोग यही सुनते हैं अक्सर, बस औकात ये हमें सुनाई देता है कि ये इतने 1000 पॉइंट, कभी 500 पॉइंट्स, कभी 1000, कभी 2000 पॉइंट के साथ नफसियाती हदें अबूर कर गई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से लेके 2022-23 तक 170 कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं। जस्ट ओनली 67 कंपनीज जो हैं वो लिस्ट हुई हैं। 103 कंपनीज का एक गैप है। तो ये एनॉमली थी जिसके ऊपर हमने इस स्टडी को बेस बनाया और कंडक्ट किया कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ मार्केट की इंडेक्स जो इंडिकेटर है परफॉर्मेंस वो अप जा रहा है, दूसरी तरफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि इंडिया जो हमारा साथ ही कंट्री है, उसमें 1315 कंपनीज इस दौरान में लिस्टिंग में इजाफा हुआ। एक तरफ हमारे पास लिस्टिंग गैप है, उसमें इजाफा हुआ। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इस स्टडी को कंडक्ट किया है। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि हम क्यों लिस्ट हो, then we can conclude that स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्ट होता है, देन हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान में क्या उनको ये चीजें अवेलेबल हैं, ये अचीव कर रहे हैं तो फिर वो लिस्ट होंगे, नहीं तो लिस्ट होंगे। मुख्तलिफ जो थ्योरेटिकल लिटरेचर है उसमें डिबेट है कि कंपनियां इसलिए IPO करती हैं कि वो क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होती है फाइनेंसिंग की, या डेट फाइनेंसिंग कर सकती हैं या IPO फाइनेंसिंग करती हैं, थ्रू करती हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। मोस्टली वो अपनी ओनरशिप उसमें बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल को लाते हैं थ्रू शेयर्स। पब्लिक ओनरशिप जब बढ़ती है तो जो लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है उसका रिस्क कम होता है और रिड्यूस द रिलायंस ऑफ फ्यू मेजर इन्वेस्टर्स। तो उसमें जो इन्वेस्टर जो माइनर जिसको हम कहते हैं मेजॉरिटी नहीं मिनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है। दूसरा ये था कि जो फर्म लिस्ट होती हैं उनकी फाइनेंशियल विजिबिलिटी भी बढ़ती है, लाइमलाइट का हिस्सा बनती है, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता है और जो और उसकी वजह से अपने आप को एक्सपेंड कर पाती हैं, अपने बिजनेसेस को, अपनी R&D को। इसके अलावा जो एक और भी बहुत सारी डिबेट में से एक और डिबेट थी कि फर्म इसलिए स्टॉक मार्केट में रहती हैं कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हैं वो जैसे फाउंडर हैं, अर्ली इन्वेस्टर हैं, वो अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं कि वो इस कंपनी के अपने शेयर्स जनरल शेयर पब्लिक को सेल आउट करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। या इसमें लिस्टिंग एक और भी है कि जो फर्म्स लिस्ट होती हैं तो उनके शेयर्स की वैल्यूएशन होती है और उसकी मार्केट वैल्यू होती है। दूसरा उसमें एक और भी एक फैक्टर, जब कंपनी लिस्ट होती है तो गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि उसमें उनको चीज़ों को कंप्लाई करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसलिए जो एक डिबेट है कि जब कंपनी लिस्ट होती है तो
उनका जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस स्टडी की डिबेट शुरू की। तो इसमें एक एक डिबेट है कि यूटिलिटी थ्योरी कहती है कि अगर आपकी बेनिफिट कम हो और कॉस्ट बीइंग लिस्टेड ज्यादा हो, एंड अल्टीमेटली आपके लिए जो लिस्टिंग है वो बेनिफिशियल नहीं रहती, मीनिंगफुल नहीं रहती। तो हमने इस स्टडी में मुख्तलिफ चीज़ें सामने रखी हैं कि फर्म्स के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और गवर्नेंस के फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमने इस स्टडी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ड्रा किए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फर्म्स स्पेसिफिक फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नेंस है, कि कैसे फर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो लिस्ट हो या डी लिस्ट हो। उसके बाद रेगुलेटरी वेरिएबल्स भी थे। उसमें फिर जो हमने सबसे देखा, जो सबसे ज्यादा सेक्टर्स जिनमें डीलिस्टिंग सबसे ज्यादा थी, उनका भी एक एनालिसिस इस स्टडी में कंडक्ट किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें हमने इंडियन स्टॉक मार्केट का भी किया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से फैक्टर हैं और पाकिस्तान में कौन से फैक्टर्स हैं। इस स्टडी के लिए हमने जो फोकस किया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी और इंडिया की 2 स्टॉक एक्सचेंज थी। उसमें हमने 250 फर्म्स सेलेक्ट की हैं। एक्चुअली 60 फर्म्स वो हैं जो डीलिस्ट हुए हैं और 60 उसकी मैचिंग फर्म्स हैं, इक्वल साइज या सेम इंडस्ट्री के। 120 फ्रॉम ईच स्टॉक एंट्री, ओवरऑल जो 240 थे। उसमें हमने जो डेटा लिया वो उनकी वेबसाइट से लिया, मार्केट से और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह से। फाइनेंशियल गवर्नेंस के जो सोर्स थे वो हमने उनकी रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, जिसमें हमने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, इसी तरह स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से। और इस पे हमने जो इकोनोमेट्रिक का मॉडल अप्लाई किया, वो कॉक्स हेड एज मॉडल है जो मेजर करता है कि कौन सा फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उसको डीलिस्ट होने में। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड को देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रीजन में डीलिस्टिंग हुई, ग्लोबली डीलिस्ट हुई है कंपनियां। जो लिस्टिंग गैप है वो कम है, मीन डीलिस्ट कम हुई, लिस्ट ज्यादा हुई है। अगर इसको वी कुड सी के 6,633 कंपनीज लिस्ट हुई और उसके अगेंस्ट जो 6,300 कंपनीज डीलिस्ट हुई। अगर हम जस्ट यूएस और यूके को just देखें, इन दोनों कंट्रीज को, तो इनमें जो ड्रॉप है वो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बहुत सारी कंपनियां छोड़ के चली गई। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं 2010 से लेके, तो जो हमें नजर आता है वो सबसे ज्यादा कंपनियां जो डीलिस्ट हुई 2012 में हुई, 68 कंपनियां एक साल में डीलिस्ट हुई। उसके मुकाबले में जस्ट ओनली 6 कंपनी जो है वो आई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी तमाम सालों में डीलिस्टिंग का ट्रेंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लिस्टिंग। फिर हमने जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हमने लिए थे उनके ऊपर हमने अपना मॉडल ट्राई किया। तो हमने फाइंड आउट किया जो पोस्ट 2010 सबसे ज्यादा डीलिस्टिंग हुई, सबसे ज्यादा जो डीलिस्टिंग हुई 2000 में हुई। इस दौरान एक डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट भी पास हुआ था, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो आज बना है। पहले ये 3 स्टॉक एक्सचेंज थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर, कराची, और इसको मर्ज करके एक बनाया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये उस दौरान एक डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो हमारा डीलिस्टिंग का गैप है, टोटली हमारे पास जब एज ईयरली मेंशन के 170 कंपनी डीलिस्ट हुई एज कम्पेयर टू द 61 कंपनीज जो न्यू लिस्टिंग हुई। इसकी वजह से 103 कंपनीज का एक लिस्टिंग पाकिस्तान में पाया जाता है। इसमें जब हमने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखे और मुख्तलिफ इंडिकेटर देखे, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर नजर आ रहे थे वो थे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारे लिए ये अगेन एक एनॉमली थी कि ये कंपनियां क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाई या डिविडेंड नहीं पे कर पाई। बाकी जो लिस्टेड हैं जो सस्टेन कर रही हैं वो कैसे पे कर रही हैं।
तो हमने इस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डीपर करने के लिए हमने फिर एक एनालिसिस किया कि वो टॉप 100 कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो कौन सी हैं, वो कैसे और कितना, क्योंकि जो हमारे इंडिकेटर्स आए उसमें सो फाइनेंशियल इंडिकेटर सबसे अर्निंग पर शेयर था, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनीज में फोकस कर रहा था जहां उनको डिविडेंड और अर्निंग ज्यादा मिल रही थी। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स थे वो डिसाइड कर रहे थे कि जो कंपनीज की विजिबिलिटी को और उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को और उनकी बाय एंड सेलिंग को, जिसकी वजह से आ, ये लिक्विडिटी का भी फैक्टर बन सकता है। और तो फिर इसको हमने फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए देखा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो एज कंपेयर टू दीज कंपनी जो डी लिस्ट हुई हैं, वो कौन सी कंपनियां हैं जो लिस्ट अभी सस्टेन कर रही हैं और वो बहुत अच्छा पे कर रही हैं। तो हमने इस KSE 100 के जो 100 कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनका एक एनालिसिस किया, और उसके साथ ये जो बाकी हमारे फर्म्स थे, तो हमने ये देखा कि जो KSE 100 है, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले साइज बेस्ड इंडेक्स हुआ करती थी, कुछ 1-1.5 साल से फ्री फ्लोट अभी हुई है, उससे पहले साइज बेस्ड हुआ करती थी। तो जो हमें जो फर्स्ट 20% इंडेक्स थी उसमें जस्ट 6 कंपनी नजर आई जो इसको इंडेक्स को कैप्चर कर रही थी। फर्दर जो 25% इंडेक्स थी वो 7 कंपनीज थी, और उससे फर्दर जो 25% थी, मतलब 50 और 70 के दरमियान, वो 19 कंपनियां थी, और जो लास्ट 25% इंडेक्स थी वो 60 कंपनीज थी। अगर हम इनकी अर्निंग को देखें, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को, और जो पे आउट रेशियो को, जो सबसे ज्यादा पे आउट रेशियो है वो फर्स्ट इंडेक्स के 36% पे आउट रेशियो, और सेकंड की 25%, 44% एंड 20.25% समथिंग है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो लार्ज साइज, फिर हमने फर्दर ये देखा कि ये सेक्टर वाइज वो कौन सी कंपनियां हैं जो इन 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 इंडेक्स में जाके, तो ये कैसे, क्योंकि ये पे कर रही हैं, तो इतना तो अर्निंग या रिटर्न अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानी मार्केट में, तो ये कैसे कर रही हैं। हमने फिर फर्दर जाके उन फैक्टर्स को देखा जो ये जिनसे ये बिलोंग्स करते थे। और अगर हमने देखा तो सबसे पहले जो पहला सेक्टर है वो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो 18.89% इंडेक्स वेट को कैप्चर कर रही हैं, और उनका जो कैपेसिटी है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उनकी हमने शेयर ग्रोथ 39% है, और इनका जो पे आउट रेशियो है 28 पॉइंट समथिंग है। इसमें अगर हम देखें तो जो टॉप सेक्टर्स थे, ये वो सेक्टर्स हैं जो ऑपरेशनली अगर हम इनका एनालिसिस करें, कमर्शियल बैंक्स हैं पाकिस्तान में, अगर उनका आप देखें तो वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ज्यादातर उन्होंने डेट अपने डिपॉजिट जो है स्टेट को दिया हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल में 90% तक जो उनका डिपॉजिट है वो स्टेट को लेंड किया हुआ है, जिसके बदले में वो हाई पॉलिसी रेट के लेके और एक रेंट सीकिंग कर रहे हैं। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल की प्राइस अगर आप ऑपरेशनली देखें तो हर दफा बढ़ रही होती है, उसको डॉलर के साथ भी हमने लिंक किया कि डॉलर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है। ये तो लोकल कंपनीज हैं क्योंकि एक्सप्लोर करती हैं, तो इनका तो एक्सप्लोरेशन वो प्रोडक्शन तो चल रही है, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और उसके बाद फर्टिलाइजर की companies हैं, उनका सबसे ज्यादा था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगेन, जिसका डिस्कशन हुई कि उनको 100% कैपेसिटी चार्जेस भी दिए जाते हैं, जो अर्निंग की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो और दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस की कंपनी, ये भी, ये वो 4-5 सेक्टर्स हैं, अगर हम इनको देखें तो ऑपरेशनली इनकी एक मोनोपोली है इस सेक्टर में इनकी, और बहुत मुश्किल है। और इनकी जो अर्निंग जो प्रोसेस है वो मोस्टली सीकिंग बेस्ड है, पॉलिसीज के थ्रू, और इस जो डिफरेंट हमारे इकोनॉमिक चेंजेस के जरिए ये अर्न कर रहे हैं। फिर हमने सबसे जो टॉप डी लिस्टेड सेक्टर से उनको देखा तो उनमें सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के जो सेक्टर थे तीनों, और एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उसमें ये आए। उसमें अगर हमने देखा तो इनकी जो, फिर अगेन वही आया था कि इनकी अर्निंग जो पर शेयर है बहुत कम थी, जिस सेक्टर। और इसी तरह फर्म एज भी
मैटर कर रही थी, both textile sector shows rate increasing private transition like जैसे EFT more market metrics जो है, ये वो सेक्टर से जो सबसे ज्यादा डीलिस्ट हुए, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर हमारे टेक्सटाइल के सेक्टर से, जो अगेन अगर हम देखें तो वो भी सब्सिडीज और बेस्ड मैकेनिज्म के ऊपर चल रहे हैं, जिनमें मोस्टली जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस थे वो थे। उसके बाद फिर हमने इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किया, तो उसमें हमने देखा कि उसमें लिस्टिंग बहुत ज्यादा है, ये हमने देखा डीलिस्टिंग बहुत कम है। और लिस्टिंग उनकी अगर आप देखें तो एक एक साल में 309 400 से फर्म्स लिस्ट हुई हैं, एज कम्पेयर टू कहीं 40-50 डीलिस्ट होती रही। तो इसमें भी हमने उन्हीं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को सामने रख के उनका डेटा इकट्ठा किया और उसके ऊपर एनालिसिस किया। जो इकोनोमेट्रिक्स के चीज़ें थी उसमें अ, वही चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए वहाँ एक जो फिर जाके फर्दर हमने एनालिसिस किया कि वो कौन से फर्म्स हैं जो इनके पास लिस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक फोरम बनाया जिसको जेम बोर्ड कहते हैं, इसमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को इंकरेज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें रेगुलेटरी बर्डन को कम किया है। इंडिया ने भी इस तरह से 2012 में एक इंट्रोड्यूस करवाया था, एक फोरम, अल्टरनेटिव फोरम, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आ सकती थी। उसका जो उसमें सबसे ज्यादा उसकी वजह से फर्म्स, जो स्मॉल और मीडियम फर्म्स थी वो लिस्ट हुई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ जो लिस्टिंग रेगुलेशन से बहुत ही कम थे, लीस्ट के थे, जिसमें जो मुख्तलिफ डिफाइन किए होते हैं कि आपका अर्निंग कैपिटल इतना हो, इतना सब्सक्रिप्शन लेवल हो, ये सारी चीजें। फिर ऑनगोइंग जो कंप्लायंस है भी बहुत ज्यादा कम थी। फिर अगर हमारे पास एक केस स्टडी है, जैसे यूएस स्टॉक एक्सचेंज एज कंपेयर टू द यूके स्टॉक एक्सचेंज, जब यूएस में फ्रॉड्स आए, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स आए, उन्होंने एक सॉर्बन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें थोड़ा सा रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क था उसको स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में वहाँ लिस्टिंग कम हुई। उसके मुकाबले में यूके ने अपना जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको थोड़ा सा इजी कर दिया, जिसकी वजह से यूएस से बहुत सारी फर्म क्रॉस लिस्ट हुई यूके में। तो इंडिया में भी इसी तरह था, बहुत सारे स्टार्टअप्स, छोटी फर्म्स और जो लोकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फर्म्स थे वो उनकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आके लिस्ट हुए। हमने क्वालिटेटिव डिस्कशंस भी की, जिसमें काफी चीजें आई कि गवर्नेंस, इसमें एक और फैक्टर, प्रोमिनेंट फैक्टर था, वो जो गवर्नेंस का फैक्टर था। पाकिस्तान में जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का जो एक कंसेप्ट है, मोस्टली ये है कि कंट्रोलिंग फैक्टर के तौर पे जाना जाता है। उसका जो मकसद ये नहीं है कि वो फर्म के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा। ये जो जो वो टेक्निकल लोग हैं वो उस बोर्ड में नहीं लाए जाते। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो मेरी अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हवाले से देखा, या तो स्टेट ओन्ड रही थी कंपनियां हैं या स्टेट ओन्ड थी। अच्छा, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उसमें अगर हम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को देखें तो एक ही सेक्रेटरी, जैसे सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो उस स्टेट ओन्ड का भी मेंबर है उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का। साइमल्टेनियसली वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पॉलिसी बोर्ड का भी मेंबर है, जिसकी वजह से जो गवर्नेंस का एक पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और इसी तरह जो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है का, उनका भी यही है कि जो मोस्टली मेंबर्स हैं, जो मेजॉरिटी शेयर्स होल्डर हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, टेक्नोक्रेट या एक्सपर्ट्स हैं वो कम है। इसमें कंक्लूजन में और रिकमेंडेशन में हमने हमारी ये है कि जो पहले जो गवर्नेंस इकोसिस्टम है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उस वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन के उनके शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, तो उनका जो बोर्ड है मोस्टली सेक्रेटरी और फिर वही सेक्रेटरी एससीसीपी का होता है, तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा, जो लार्ज साइज फर्म्स हैं जो स्टेट ओन्ड भी हैं और कुछ नहीं भी हैं,
उनकी वजह से भी पहले अभी रिसेंटली इन्होंने फ्री फ्लोट इंडेक्स की थी, उससे पहले साइज बेस्ड इंडेक्स थी, जिसकी वजह से जो 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 स्मॉल कंपनीज थी उनकी विजिबिलिटी बहुत कम थी। और ईज ऑफ जो अच्छा बहुत सारी जो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं कि हर साल जो उन्होंने कंप्लायंस के तौर के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज में फिर एसएसीपी में जमा करवानी होती, इवन के जो ऑडिटिंग भी है, चंद एक फर्म्स हैं जो रोटेट होके उन्हीं का वो हर किसी का कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फिर इसी तरह जो कंप्लायंस कॉस्ट है कि फलां डॉक्यूमेंटेशन है, फलां करना है, ये करना है, और आम फिर भी ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है लिस्टिंग की, जो बहुत सारे अननेसेसरी हैं जिनको रिड्यूस किया जा सकता है। अ, दूसरी तरफ क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जो हमारा जो रीजन है उसमें सबसे कम पाकिस्तान में, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि जो इन्वेस्टर है वो मोस्टली या तो सेविंग नेशनल सेविंग में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, आजकल बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां से उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। जब तक इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो एक थ्योरी कहती है कि जब प्रेफर्ड हैबिtat जहां उनको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है और ईज ऑफ होता है तो वो वहीं जाके इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट का ज्यादा होना, उसकी वजह से फिर इन्वेस्टर का स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आता, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा पे कर रही होती हैं, क्योंकि उस दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर उन चीजों को कंट्रोल किया जाए तो उस स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी लाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Wahid Saab. The last presenter is Nabila Aftab from University of Peshawar. She will talk about an assessment of Pakistan's corporate investment cycles and political unpredictability. Assalamu alaikum everyone. I am Nabila Aftab. I am a PhD scholar from the University of Peshawar in the Department of Political Science. First of all, I would like to thank the Rasta team and especially my mentors who helped me, who guided me. I am a principal investigator of this research. Dr. Muhammad Fahim Khan, Fahim Bashir, and Muhammad Zubair. These are the co-PI in this research. The topic of my research is assessment of Pakistan's corporate investment cycles and political unpredictability 2000 से 2022 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ये है कि सबसे पहले हमने इसमें ये देखा है कि ये पॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है, और ये जो पॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है ये पाकिस्तान में ये बिजनेसेस है इनको किस तरह से ये इफेक्ट करती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्पेशली अराउंड द इलेक्शंस टाइम creates significant uncertainty फॉर बिजनेसेस इन पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो है इसको कितना और किस तरह इफेक्ट करती है। और ऐसे स्टेट में या पाकिस्तान की एज अ डेवलपिंग स्टेट हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से हालात हैं जिस वक्त ये कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट ये लो होती है या ये हाई रेट पे चली जाती है। Understanding how this uncertainty impacts corporate investment is crucial for the formulating effective economic policies. Focuses on the period from 2000 to 2022, covering multiple national elections like 2002, 8, 13, 18, ये सारे इलेक्शंस जो हैं इनको फोकस किए हैं। तो इसमें हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि टू असिस्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन uncertainty during election years and corporate investment decisions. Second, investigate the impact on investment cycles with elections as a proxy of political uncertainty. Uncertainty को लेके ये elections के दिनों में हमने ये देखना है कि किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है कितना इम्पैक्ट होता है। Helps understand how political factors influence economic activity and long-term growth in Pakistan. Okay, background political instability in Pakistan. अब political instability तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये frequent changes in government। जो हमारी स्टेट में डेवलपिंग स्टेट को मतलब पाकिस्तान की बात करें तो ये frequent changes जो है गवर्नमेंट में आ रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है,
से ये चेंजेस गवर्नमेंट में आ रही हैं, ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी नई पॉलिसीज के साथ आती है। अब तो नई पॉलिसीज के साथ आती है तो ये इन्वेस्टर ना कॉन्फिडेंस शेक कर जाते हैं वहां पे। So political stability in Pakistan, frequent changes in government, upheavals, and military interventions. Impact on business operations and investor confidence. Key political events, elections in 2002, 2008, 2013, and 18. Scope of this research, examining the impact of national elections on corporate investment. Key industry studies, healthcare, telecommunication, energy, and other sectors sensitive to the government policies, relevance for developing country like Pakistan. So this one is my research methodology. Data set ये था कि 180 non-financial firms list in the Pakistan State Stock Exchange, covering 2000 से 2022. मेथोडोलॉजी अप्रोच जो थी वो क्यू मॉडल जो था वो यूज किया है। ये हमारे वेरिएबल से हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस वन जो था वो ये है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज टू ड्रॉप ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर्स जिस वक्त भी होते हैं तब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये बहुत ड्रॉप हो जाता है। हाइपोथेसिस टू ये है कि पॉलिसी चेंजेस इलेक्शन इम्पैक्ट investment cycles. Hypothesis 3, those election outcomes have a more pronounced effect on investment. ये those election outcome जो है ये बहुत असरअंदाज करता है investment पे। Hypothesis 4, businesses are more likely to increase investment after an election if they perceive a certain outcome. Close election outcomes सर जिस तरह से election जिस वक्त हो रहे होते हैं तो क्लियर नहीं होता कि किसी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दोनों जो हैं वो सेम लेवल पे जा रही हैं तो उसपे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये बता नहीं सकते या वो इतना कॉन्फिडेंस उस तरह रख नहीं सकते कि कौन-सी पॉलिसी आएगी और हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। Then key findings, political uncertainties, decline in corporate investment during election years, wait and see approach by business due to the uncertainty. Higher impact on investment decisions in close elections, post-election recovery, investment level increase but at slower pace. Corporate investment and political freedom. Pakistan has a negative impact on investment, political stability, policies, and frequent government changes reduce investment confidence. जिस वक्त ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसीज जो है वो में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। एंड गवर्नमेंट चेंजेस जो होती हैं ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो है वो रिड्यूस कर देती हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इज contrast positively correlates with investment. Corporate investment and economic freedom. Economic stability and freedom are crucial for the encouraging corporate investment. Higher economic freedom leads to better investment cycles. Investment increases in countries with higher level of economic freedom, even during politically unstable period. अगर कोई ऐसी स्टेट है जो कि जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है तो वहाँ पे ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकली अनस्टेबल भी है, तब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। केस स्टडीज एग्जांपल 1, healthcare and telecommunication sectors are highly sensitive to political changes. Market-friendly governments tend to see better investment performance. Businesses in sensitive industries adopt more conservative strategies, holding cash reserves and delaying investments. Results and discussions. Univariate analysis shows a drop in election years. Multi-analysis confirms significant impact after counting for control variables. Robustness of finding discussed include statistical significance of key variable,
ये सारा मेरी रिपोर्ट में शामिल है। Policy recommendations: establish a stable environment to maintain investor confidence. This for a charter of economy to insulate economic policies for political cycles, continuity in economic policies across different governments, special grants or insurance for industries sensitive to political changes. Then its conclusion. Election-related political uncertainties significantly impact corporate investment in Pakistan. Economic freedom positively influences investment, while political freedom discourages it. Stable and consistent policies are essential for fostering a conducive investment environment. Future research directions: comparative studies on political instabilities, impact on corporate investment in other developing countries. Further research into the long-term effect of repeated political instability on corporate growth. Specific studies on how industries react differently to political uncertainty. Thank you. Thank you, all presenters. Excellent presentations and quite interesting studies. Twangar presented a study on what lessons we can learn from the success stories of the Asian economies and how FDI can help us. I really enjoyed your study. You presented a very well document the cases of different East Asian countries. But I would really like to see what are the common lessons for Pakistan. The economies you consider, so उनमें से हम common lessons कौन से हैं जो पाकिस्तान के तौर पे ले सकते हैं? Secondly, मैं recently देख रहा था कि what kind of FDI Pakistan attracts. The nature of FDI also matters. अगर आप जापान कोरिया के एग्जांपल ले रहे हैं तो वहां पे तो एफिशिएंसी सीकिंग के लिए एफडीआई आ रही है, हमारे यहाँ तो जो अभी एफडीआई आ भी रही है तो वो तो मार्केट सीकिंग के लिए है. सो it would be very nice if you look at also by using this lens काइंड ऑफ कौन सी वो आपकी नेचर क्या है एफडीआई जो आ रही है, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा. इसके साथ साथ सेकेंडली अगर अगर आपने पाइड का काम देखा हो, वी आर सेइंग दैट अनलेस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, एफडीआई विल नॉट हेल्प. So although I know this is not your the objective of your study, but this is also a very quite interesting aspect to look at. तो उस पर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कोई मजे की हो जाएगी. And last my observation is that your policy recommendations are huge, large, very generic. I would suggest कि इनको थोड़ा सा आप specific करें because it is a policy oriented research. तो उनको उनमें से जनरल जो है वो निकाल दें और वो वाले पॉलिसी रिकमेंडेशंस रखें जो आपकी फाइंडिंग से सपोर्ट जो जो कर रही हैं उनको. दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. बट एट द एंड इट्स वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टडी. रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट. Dr. Wahid presented the case of decapitalization of Pakistan Stock Exchange. Again, good work. इसका मैं क्योंकि मेंटोर भी था, इनसे मीटिंग भी रही, गए बगाए हम आपके साथ रहे. Just one concern. One time you established that the financials matters. जो फर्म के फाइनेंशियल्स हैं वो मैटर करते हैं इन डिसीजन है उन्होंने लिस्ट करना है या डीलिस्ट करना है. एट सेकंड पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर. आई एम जस्ट क्यूरियस कि ऐसा ना हो कि हम पहले ये एस्टेब्लिश कर लेंगे गवर्नेंस स्ट्रक्चर से किसी भी फर्म के फाइनेंशियल्स कैसे इफेक्ट होते हैं. देन वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो जो दोनों आपकी स्टोरीज हैं वो कोहेरेंट हो जाएंगी. ये गवर्नेंस की वजह से फाइनेंशियल्स जो हैं आपकी अर्निंग पर शेयर्स जो हैं वो बैडली इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से डीलिस्टिंग होती है. तो कुछ इस तरह का हाइपोथेसिस निकल सकता है उसमें से. तो इंटरेस्टिंग स्टडी. एंड जो मैं अगर आपसे स्टडी है उसको कंक्लूड करना चाहूँ, योर मेन फाइंडिंग इज दैट द कंपेटिटिव सेक्टर लेस विल बी द चांसेस कि वो डीलिस्ट होगी, उसमें डीलिस्टिंग होगी. सो मार्केट अगेन वो जो सुबह डॉक्टर नदीम बात कर रहे थे, मार्केट मेकिंग वाली बात है कि हमें सेक्टर्स को जो है वो कंपेटिटिव करना है. लास्ट स्टडी जो थी वो नबीला की थी अबाउट द क्रिटिकल अनप्रडिक्टेबिलिटी. नबीला, आई वुड रियली लव अगर आप हमें अपने रिजल्ट्स भी दिखाती, because you have shown your hypothesis, but you have not shown us how you support your hypothesis. तो वो जो hypothesis आपने लिए थे, first of all, how you draw those hypotheses, it's also very interesting to see.
और उनको आपने जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस तो हमें दिखा दी हैं, बट मेरे पास जो स्टडी थी उसमें भी आपके रिजल्ट्स नहीं थे कि आपने उन हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट कैसे किया है, तो उस पे जरा वो ज्यादा अच्छा होता. दीज आर माय ब्रीफ कमेंट्स. नो, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच जी. एफटीआई वाली बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन रही. मेरा एक इसके अंदर पॉइंट था. एक इन्होंने रिकमेंडेशन की हुई थी कि नीड असेसमेंट ऑफ द इन्वेस्टर एफटीआई को अट्रैक्ट करने के लिए. मेरा पॉइंट था कि वी शुड सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बास्केट. या इसके इन्वेस्टर से कहें कि तुम अपनी नीड बताओ, हमें एज अ कंट्री, एज पाकिस्तान, we should tell the investor that these are the areas, these are the opportunities, and you come and invest in it. So I would like to see कि आपका सर इसमें क्या व्यू पॉइंट है, और अगर ये हम करें तो बड़ा अच्छा है. दूसरा, लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. वी शुड कंडक्ट अ स्टडी ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल, कि हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ है. जब तक लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, पॉलिसीज पे, फॉरेन इन्वेस्टर तो आएगा नहीं. लिहाजा मैं समझता हूँ कि की जो है हमारी, वो होनी चाहिए लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे लेके आना, थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसके साथ आए. तो दोनों चीजें, एक तो जो इन्वेस्टमेंट बास्केट है हमारी वो डिफाइन होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम अपने मुल्क में इस एरिया में इन्वेस्टमेंट ड्रॉप जाते हैं. और इन्वेस्टर जो बाहर से आएगा वो डेफिनेटली किसी लोकल इन्वेस्टर देता है, तो लिहाजा लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है बढ़ना बहुत जरूरी है. थैंक यू जी. गुड पेपर्स, आई एंजॉयड देम. ये जो आप इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई वी आर ऑब्सेस्ड विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिमेंबर दे गोइंग टू टेक 3 times बैक. नो इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस विदाउट 30% एनुअल रिटर्न. प्राइवेट इक्विटी फंड ले ले, हेज फंड, वो 30% एनुअल रिटर्न मांगते हैं बिकॉज कंट्री रिस्क बहुत ज्यादा है, वैसे चीजें वगैरह वगैरह. सो दे एक्स एंटी, दे वांट 30% इंटरेस्ट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल ये हमारी एक बेगिंग की जो पोजीशन है, इट्स ओनली बिकॉज वी फील कि हमने खुद कुछ नहीं करना, फॉरेनर करेगा आके. ठीक है, मैं अक्सर लोगों से जोक करता हूँ कि हम तो बस गोल्फ खेलेंगे, फॉरेनर आके सब कुछ करेगा. आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर दैट फर्स्ट. नंबर 2, जो आपने बात की है उन सारी फॉरेन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सारों में इनिशियल कंडीशन बहुत फर्क है. ऑल ऑफ देम वेंट थ्रू a huge cultural change. The Meiji Restoration in Japan, the Cultural Revolution in China, Vietnam went through a war, so they went through a major change. हम तो अभी तक शलवार कुर्ता ही नहीं छोड़ते, धोती नहीं छोड़ते. हम तो बैठे हुए हैं अपने वो उसी चीज में. हमने 10 छुट्टियां लेनी है उसकी. कल कोरिया पे बड़ा अच्छा पेपर था, गिव इट यू फील लाइक. खालिद इकराम यूज्ड टू वर्क इन कोरिया. उसने दिया, वो कहता कोरिया 5 छुट्टियां लेता था साल में. 5 छुट्टियां, 5 सिर्फ, होल ईयर. हम लोग तो, हमारे पब्लिक सेक्टर में 73 हॉलीडेज हैं. 73 प्लस वी हैव ईद की 10 छुट्टियां. तो यहाँ क्या काम चलेगा? तो लेबर प्रोडक्टिव फिगर्स हमारे एडजस्ट होने चाहिए उसके साथ, बिकॉज वी रियली डोंट वर्क हार्ड. नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपने रेगुलेशन नहीं डाला, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर टू, बिकॉज जहां कंट्री की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी वहां एफटीआई गएगी. हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइनिंग स्टेज पे और है भी कम. राइट नाउ इट्स बाय 8%. सो ऑब्वियसली हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. जो तीसरी चौथी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस मुल्क में स्टॉक मार्केट ही नहीं, जिस मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, वेल कम टू वाहिद पेपर नाउ, कि स्टॉक मार्केट हमारी जब मर रही है तो लोग देख रहे हैं. और जो फिर हम कहते हैं पाइड में बड़ी मजेदार भी गोट टर्म, सनसेट इंडस्ट्री. सनसेट क्या है? सेठ होंड स्टंटेड नॉन प्रोफेशनल इंडस्ट्री है. तो सेठ होंड कंपनी है, छोटी छोटी, जो जाहिद साहब अभी बात कर रहे थे, who's interested in a country like this. तो एक तो वो चीज है. नाउ कमिंग टू वाहिद पेपर, वाहिद साहब बड़ा अच्छा, गुड गुड पॉइंट, गुड आइडियाज वगैरह, बट 2-3 चीजें जरा नोट कर लें. कि एक तो ये जो हमारी स्टॉक मार्केट, आपने एग्रीगेट फिगर्स नहीं दिखाए. हमारी स्टॉक मार्केट एवरेज एग्रीगेट में डिक्लाइन कर रही है. हमारी स्टॉक मार्केट, अगर आप एक चीज दिखा देते ना बीच में, ये हमारी स्टॉक मार्केट इस वक्त तकरीबन 7-8% ऑफ जीडीपी है. एट इट्स पीक 20% थी. 2010 से पहले हमारी स्टॉक मार्केट ज्यादा बड़ी थी. 2010 में हमारी स्टॉक मार्केट, द ओनली स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, क्लोज फॉर 3 months. ठीक है, और वो 3 months की जो क्लोजर थी, इट ह्यूजली अनसेटल द मार्केट. और फिर हमारी स्टॉक मार्केट अब 7-8% ऑफ जीडीपी है. अगर आप बाकी कंट्री से कंपैरिजन करें, इंडिया की स्टॉक मार्केट इज ओवर 100%, मलेशिया की स्टॉक मार्केट इज ओवर 100% ऑफ जीडीपी, 100% ऑफ जीडीपी. तो हमारी स्टॉक मार्केट ना होने के बराबर है. दूसरी चीज, आपने जो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, बड़ी अच्छी बात की। जो मैं शुरू में कह रहा था वो ये कि हम साइटेशन नहीं देते। पाइड की स्टडी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बड़ी, जिसमें हमने कहा है कि 31 कंट्री कंपनीज, सॉरी बिजनेस हाउसेस ओन द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना जी। अब वो चीज बड़ी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आप बातें की उसमें सब है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इतनी छोटी कंपनी का फायदा क्या है, और ये कंपनीज लिक्विड नहीं है, स्टॉक मार्केट में तो है ही नहीं। देयर इज नो सिंगल डाइवर्सिफाइड कंपनी इन पाकिस्तान, व्हिच मींस वाइड ओनरशिप। 5% आपके पास, 10% मेरे पास, 15% उसके पास। आप एप्पल को ले ले, एप्पल को नोबडी ओन्स एप्पल, नोबडी ओन्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह। स्पॉन्सर्स के शेयर भी बहुत थोड़े रह गए, बाकी सारी। एक और चीज, टेक ओवर क्रिएट्स एफिशिएंसी। हमारी स्टॉक मार्केट जो टेक ओवर ही नहीं होता, ऑल द टेक ओवर आर हेल्ड आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, और पता नहीं कैसे होते, बट देयर इज नो कॉर्पोरेट रेडर। तो जब वो ना होगा तो क्या होगा? तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज देखने। बाकी इन्वेस्टमेंट की स्टडी आपकी ठीक थी, बट आई थिंक मोर वेरिएबल्स दैट यू इंपॉर्टेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा लास्ट जो प्रेजेंटर मैडम आपसे है, वाज रियली गुड प्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात आपने की। रेस्ट अश्योर कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, कि हमारी जितनी भी प्रोजेक्शंस चीज़ों की होती है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस डेटा, पास्ट डेटा, तो 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस या लोगों ने यही देखा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे रही है। एक तो यह कि आप ने ये कहा है कि जी हेल्थ केयर एंड द अदर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स, इसकी बेस क्या है? हमने तो ये देखा है कि हर सेक्टर, एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सोशल, एवरीथिंग ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये सारे के सारे जो है वो मुतासर होते हैं। दूसरा, क्या आप ये चाहिए कि पॉलिसीज पॉलिटिकल पॉलिसीज नहीं होती, पॉलिसीज तो कंट्री की पॉलिसी होनी है, एंड दैट शुड बी कंटिन्यू। और उसके लिए क्या आप ये समझते हैं कि जो सिर्फ एक नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, क्या जितनी भी पॉलिसीज हैं ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सेटअप वो कंटिन्यू नहीं रहती, एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज? थैंक यू। मेरा क्वेश्चन तवंगर साहब से। तो बहुत अच्छी स्टडी ना कि ईस्ट एशियन हमारी फेवरेट एग्जांपल है नॉर्मली जब भी हम इसको कोट करते हैं। डॉक्टर नदीम ने भी जिस तरह कहा, और मैं भी ये पूछना चाह रहा था आपसे, एक जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपने मिस किया है दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो भी अफजल साहब ने बात की। उन कंट्रीज में आप देखें कंटिन्यूटी और पॉलिसीज और जो पॉलिटिकल सेटअप था बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा था। अगर एक लीडर है महातिर है तो लाइफ टाइम के लिए महातिर ही चल रहा था। हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह कभी पीडीएम 1 आता है, पीडीएम 2 आता है, कभी एक रिजीम आती है, कभी प्राइम मिनिस्टर हर 3 साल बाद चेंज हो जाता है। तो इसके होते हुए तो हम तो अपना सीपैक लेके नहीं चल सके। एक और वेरिएबल भी आप लोग प्लीज अपनी स्टडीज में डाल दें, the lack of economic thinking and intellect in this country, which is evident right here. सुबह कितने लोग थे, लंच के बाद कितने हैं? कॉन्फ्रेंसेस पे लोग सिर्फ रोटी खाने आते हैं, हम सोचने वाले लोग ही नहीं। आप वियतनाम, चाइना में जाके देखें वहां कैसे लोग बैठे होंगे, इंडिया में देखें कॉन्फ्रेंस हॉल खाली नहीं होता जब तक लोग सुनते नहीं है। तो ये भी एक कल्चर। एक सेकेंडली, मैं जब भी कहीं सिविल सर्वेंट्स को इधर उधर लेक्चर देने जाता हूँ मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 बिलियन रुपीज हैं, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और नॉट? कोई सिंगल हैंड भी ऊपर नहीं होता कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि आपके मुल्क में लास्ट जो 2 बिलियन का फिगर क्रॉस किया था इट वाज पीटीआई के रिजीम में, उसके बाद तो हम 1 बिलियन 1.5 इसी में रहते हैं। और इसका आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि जब आप ईस्ट एशियन जो हमारी फेवरेट एग्जाम्पल है जब हम कोट कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ें मिसिंग है आपके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में और आपके जो वेरिएबल्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर खालिद। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा जो पहले प्रेजेंटर हैं डॉक्टर मानुल्लाह की ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। स्पेशली एफडीआईज के केस में जो हमारी इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली अब जो नए बिजनेसेस हैं विच आर नॉट एक्चुअली हैविंग एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, रादर वो आपका ब्लॉकचेन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट डू यू फोरसी इन फ्यूचर कि क्या कंट्रीज लाइक पाकिस्तान would be able to garner any foreign direct investment in this country, whereas जो हमारी global business environment है वो किसी और तरफ जा रही है as compared to that? अच्छा, मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को हमने कहीं एक्सक्यूज तो नहीं बना लिया
अभी बांग्लादेश आया, दोनों टेस्ट में जो उसने हमारा हशर किया है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो शायद उसकी पीक पे है। तो कहीं हमने अपने पूरे प्रोसेस को इग्नोर करके जस्ट एक एक्सक्यूज के तौर पे तो नहीं यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो दुनिया में काफी मुल्कों हाँ, अफगानिस्तान से भी हारे थे। हालांकि देखिए, हमने शायद थोड़ा सा इसको जरा एक प्रोसेस जो कि इतना जल्दी टूटना नहीं चाहिए, और कंटिन्यूटी एपी में पिछले 15 साल से कंटिन्यूटी है, पंजाब में 15 साल कंटिन्यूटी रही है। तो ये मेरे ख्याल है थोड़ा सा इसको जरा इससे आगे भी चल के सोच लें। इससे माई जस्ट एक सजेशन कि जब हम ये बात करते हैं तो इसको जरा एक जस्ट एक इजी वे आउट नहीं ढूंढे। Okay, anyone else? Okay. Uh, no, it's time to respond. Twangar, starting from with you. Gee, thank you very much. Mostly, no, I agree with many of the comments that have come in. I would just like to club a few points together. Um, so the obsession with FDI, that's the basic question. Just to clarify, this obsession is not based on the fact that we will get some money in the country or some foreign exchange and some dollars in the country, and that would really help us. It will, build our industry or build our capital. That's not the objective. And likewise, by the same logic, uh, you know, it is not of the concern as far as this research goes that even if some of this foreign direct investment down the line leads to the profits going back to the countries of origin, by the same logic, it's not interested in that. But the point in which it is interested in is within the framework of this research is the knowledge that the FDI brings with it. So FDI is a whole package that comes in the country, and obviously I don't have time here, but there are different kinds of FDI as some of the colleagues here mentioned, and that also matters. So in some cases, the FDI comes in a package where you have the whole blueprint of what to make, how to do it, where whether it's OEM, ODM, OBM, whatever it is, but that package is the knowledge we can gain and the know-how transfer of know-how is the point that I'm interested in, and that was the point and purpose of the research. So for example, just as an example, we saw that a couple of years back this phone assembly process started in Pakistan. That's just an assembly process, but that is something that can lead to um, a transfer of knowledge that can lead to us replicating and imitating and through reverse engineering possibly designing our own phones. So that's the bottom line in terms of FDI. And so even if the investors go back, even if the profits go back, the know-how is here to stay, the knowledge stays. And so that's one of the points that I'd like to say. Um, the rest of the points I do agree with in terms of inclusion of variables, uh, political stability and continuity. Some of these things are actually mentioned in the report. I do agree that the policy recommendations can be a bit more focused. I'll see if we can change that. Um, in terms of domestic investment, yes, obviously, I agree with the fact that if the domestic investor is not confident, it's not likely that FDI will come in. But once again, the purpose of the study was not on how to attract FDI. It was that FDI is a mechanism in which, through a set of detailed policies and detailed interventions that take place, we can reap benefits from it. So that was the focus of the study. I also agree with the culture bit is evident in this room, as Dr. Saab mentioned. When we look at Japan and we look at these East Asian economies, these were the leaders of the East Asian success, and there's this cultural affinity between these nations as well that we need to see. And one of the recommendations I probably missed in this, or I didn't have time, that East Asian economies benefited from each other. They were able to, through this cultural affinity or through this
For example, Japan's willingness to share its knowledge, right? Through this, they were able to benefit from this. But when we look at our region, we have, enemies on either side of the borders. So we need to start from our own region, and obviously, for that, many things need to take place. But it's good to, it's important to mention these things. I also agree on the cultural bit. That is something that I don't know how to include in this, but on that note, when we use the fixed effects model, we actually do take care of aspects that are constant across time and vary across entities. So that is the fixed effects model. It does take into account these sort of cultural differences, and it minuses it in theory. I can't get into the mathematics of it too much, but that was it. The rest of the suggestions and questions, I tried to note them all down, but in any case, I agree with everything that's been said here. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, सबसे पहली जो सजेशंस आपकी थी कि गवर्नेंस फर्स्ट देन फाइनेंशियल, इंशाल्लाह मैं इसको उसी एंगल से डेवलप करके कर लूंगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर देखते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को, और फाइनेंशियल इंडिकेटर इंप्रूव होते हैं जब गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो और वैल्यू एडिशन कर रही हो। दूसरा सर का सवाल था जो जीडीपी के लिहाज से कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें मैंने लिखा हुआ है 2010 से लेके 750 कंपनीज थी 2010 में, अभी जो हैं 522 हैं। श्रिंक हुई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद, अगर हम जीडीपी और उसके लिहाज से देखें। बाकी जो सजेशन थी जैसे टेक ओवर और मर्जर एंड एक्विजिशन, और बाकी जो ब्रोकर्स के हवाले से भी मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है अपनी स्टडी में, कि कैसे ब्रोकेज हाउसेज हैं जो उनकी कंपनी के शेयर्स को ऑफर करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। इसी तरह बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं ये भी स्टेट ओन में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसी तरह पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो प्राइवेट जिसको हम कहते हैं, वो जो हैं उसमें ज्यादातर फैमिली ओन्ड हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डर, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग है वो बड़ी स्क्यूड है। तो इन चीजों को बाकी जो सजेशंस हैं मैं इंशाल्लाह उनको कॉर्पोरेट कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये जो आपकी सजेशंस थी सारी, सर ये मेरे लिए रिसर्च में गाइडलाइंस होंगी मेरे लिए, मैं इनको इनकॉर्पोरेट करूंगी। और दूसरा ये है कि सर बात फिर वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आ जाती है, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर हम हिस्ट्री को देखें तब से चली आ रही है और शायद आगे भी इसी तरह से रहे। तो जी इसी में ही काफी काम करना है, तो होपफुली के पॉलिसीज जो है वो अच्छी बन जाए और इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक ना हो। थैंक यू सर।